अब आज मैं आपके सामने Eco401 के करंट पेपर्स लेकर आई हूँ। सब्जेक्टिव पार्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, व्हाट इज मीन बाय एक्सचेंज रेट। आल्सो गिव एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है? रेट एट विच वन करेंसी मे बी कन्वर्टेड इनटू अनदर। आगे इसकी एग्जांपल गिवन है, एन एक्सचेंज रेट ऑफ 123 जापानीज येन टू द यूनाइटेड स्टेट डॉलर मीन्स दैट वॉट द सेम एज USD1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू Previous Singer hypothesis. Poverty means the state of being poor, lack of means of providing material need of comfort. Next, according to the values given in the following table, calculate the injections at which level of output. ये इसके इंजेक्शन का कैलकुलेट करके लिखे गए हैं। 1 में 317, 332, 344, 352, 359. Next question है, what are the major weakness of exogenous growth theory? Which theory was developed in against of exogenous growth theory? The exogenous growth theory, also known as neoclassical growth model or slow growth model, is term used to sum up the contribution of various authors to the model of long run economic growth. Next, I discuss the component on the assets and liability side of balance sheet of a central bank. Following are the components. Number 1, loans to government notes, forex reserves, loans to private sectors. Next, liability side components: notes, coins, and currency in circulation, government and commercial bank deposit, liquidity, paper issued. Next question is, define balance of payment. How the BOP can be determined. BOP is an according record of countries' transaction with the rest of world. How the BOP can be determined? It is determined by countries' exports and import of goods, services, financial capital, as well as financial transfers. Next question है, how can a current account which is in deficit be restored to balance under fixed exchange rate regimes? There is a solution for how can a current account which is in the deficit be restored to balance under fixed exchange rate regimes. The answer is economic deflation. Identify which of the following are stock variables and which are flow variables. These are the term used to differentiate things like wealth versus income or debt versus deficit. Next, unemployment, redundancy, profits, affirmed stock market evaluation, the value of property after a period of inflation. Next, इसका आंसर है, they are the terms used to differentiate things like wealth versus income, depth versus deficit. Following are the stock variables: unemployment, affirmed stock market valuation, the value of property after a period of inflation. Flowing are the follow variables: profit and redundancies. World Bank suggests some structural reform policies for the poor countries to grow. Discuss these policies briefly. Governance and administrative reforms: privatization of state-owned enterprises, financial liberalization, deregulation involving dismantling of licensing systems and red tape, FDI liberalization, capital account liberalization. नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। इसका ये फ़र्क बयान किया गया है, रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट, डिस्कस द कंपोनेंट द एसेट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ सेंट्रल बैंक। इसके कंपोनेंट्स हैं लोन ऑफ गवर्नमेंट नोट्स, फॉरेक्स रिजर्व्स, लोन्स और प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट, इसकी लायबिलिटी साइड्स इफेक्ट्स हैं, ये ऊपर भी हम रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट गिवन, राइट ऑप्शन सॉल्यूशन में गिवन है। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इसका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आता है, पेपर्स में आता है। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनस ग्रोथ मॉडल एंड एक्सोजीनस ग्रोथ मॉडल। इसका भी डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेबल्स शोन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज GDP बाय दिस अप्रोच। ये इसका कलेक्शन, इसका सोल्यूशन भी साथ गिवन है, ये भी देख लीजिएगा।
नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेजरिंग जीडीपी के मेथड्स हैं. नेक्स्ट इट इज सेड दैट ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इशू. वाई डिस्कस. It is obvious why growth is important macroeconomic issue. Every government aspires to deliver a higher growth rate for the country. What are the different borrowing options available to the government for reducing the fiscal deficit? Non-repayable grant or printing money. Differentiate between fixed exchange rate and floating exchange rate. ये भी डिफरेंस है. Some economists suggest growth through trade strategy. Next, I mentioned the transaction that caused the demand for dollars to increase in the foreign exchange market. Next question है why countries have comparative advantage according to the Ricardo. A slope of consumption function is less than 1. What is meant by this statement? Complete explanation given है. What are the major macroeconomic variables involved in the determination of national income? What are the conditions in which foreign exchange market exists? Also give an example of foreign exchange market. Next है what thing determine comparative advantage among the countries according to Assalam-o-allaikum. What is the criticism against their argument? Differentiate between inflation and deflation. ये फिर रिपीट हो गया. What is meant by Phillips curve? Next है how crowding out of investment or demand occur due to expansionary fiscal policy. बस आज का हमारा लेसन यहीं तक था. अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा. उम्मीद है काफ़ी तक पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.